इकबाल का एक बड़ा मशहूर शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या। इज इट पॉसिबल इन दिस टाइम्स एंड हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? चलिए देखते हैं। जैसे कि अभी सुजीत ने बताया कि आज हमारे इश्यूज क्या है, सडन डेथ्स इन यंग प्रोफेशनल्स। दिस इज अ रियलिटी, हॉरिबल रियलिटी टुडे। Hypertension, diabetes, CVA, these are very common. Cancers, very common. Mental issues, familial issues, community issues, environmental issues, these are all on rise. The question is क्यों? Why? दो मेजर चैलेंजेस आज के, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे मेजर चैलेंज है व्हाट टू लर्न। क्योंकि आज हम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के दौर में, वी आर इन ए ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें हमने क्या सीखना है, दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। और इसमें एक माइंड ट्रैप है। आई नो दिस इज अ वेरी, ये बहुत खतरनाक माइंड ट्रैप है। सो अ मेंटर इज ऑलवेज नेसेसरी टू नो व्हाट वी शुड लर्न, दैट इज पर्सनल लर्निंग नीड्स। और दूसरा जो चैलेंज है, हाउ टू रिटेन इट, हाउ टू एक्ट ऑन इट। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम उसको अप्लाई करें और उसको शेयर करें। आज का जो पैराडॉक्स है लाइफ का, मेडिकल फैसिलिटीज, पर्सनल्स, डायग्नोस्टिक, लिविंग कंडीशंस, लग्जरीज, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें आज उभार पर है, ऊंची हो रही है, ऊंचा हो रही है। लेकिन दूसरी साइड देखेंगे, गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वाइटैलिटी, एंडोरेंस, हैप्पीनेस, पीस, ये सारी चीजें आज कम हो रही है। फिर क्वेश्चन है क्यों? Spending lakhs of rupees on health but still unhealthy, कहीं ना कहीं हमसे कुछ ना कुछ मिस हो रहा है। Health outcome is 20% health care, my friends, and 80% it is healthy behavior, socio-economic factors and environmental factors, and maximum we are spending on health care and treating the diseases with no cure but which are definitely preventable. अगर से ये 10 किलर डिसीज को हम देखेंगे तो इसमें से मैक्सिमम दे आर बाय आवर चॉइसेस, नॉट बाय चांस। हिपोक्रेट्स ने बड़ी अच्छी बात कही थी, क्यूर समटाइम्स, ट्रीट ऑफन एंड कंफर्ट ऑलवेज। वापस उस डिक्टम पर आज हमको जाने की जरूरत है। So my friends, today I am making a very bold statement. Future doctors will prescribe healthy lifestyle as medicine. आगे देखते हैं। आज हम देखेंगे कि हम टॉक्सिक पिल्स, सर्जरीज, ट्रीटमेंट के पीछे पड़े, लेकिन लाइफस्टाइल चेंज के लिए कोई भी तैयार नहीं। Nobody is ready to invest in lifestyle. That is a big problem. So what is lifestyle? अगर से ये सवाल हम करेंगे तो जवाब आएगा, रेगुलर पैटर्न ऑफ आवर चॉइसेस इज लाइफस्टाइल। जो हमारे चॉइसेस है वो ही हमारी लाइफस्टाइल। ए गाफिल इंसान, अपनी खुदी को पहचान। गाफिल मीन्स केयरलेस, खुदी मीन्स सेल्फ। और आज हम देख रहे हैं कि 80% ऑफ आवर पीपल, दे आर नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू देमसेल्व्स। वी आर बंडल ऑफ आवर चॉइसेस। We have freedom of our choice. Yes, definitely, no problem with that. लेकिन we, our choices are accountable. ये बात आज हम बोल रहे हैं। मैं ऐसा क्यों हूं, हम ऐसे क्यों हैं, इस पर हम यहां से बात को शुरू करते हैं। Fascinated by the new latest trends. मेरे पास लेटेस्ट चीज होना चाहिए, मोबाइल लेटेस्ट। क्या ये मेरी जरूरत है, इसको आज हम भूल गए। दूसरी चीज है, I can afford it. मैं खरीद सकता हूं तो क्यों ना खरीद। आई लाइक इट, इट्स माई चॉइस। इस वजह से आज अर्जेंसी सिंड्रोम में है। आज हम सब अर्जेंसी सिंड्रोम के शिकार हैं, which has created consumerism and capitalism, and that is driven by most powerful engine, that is advertising. आज हमारे चॉइसेस एडवर्टाइजमेंट के जरिए होते हैं। एडवर्टाइजमेंट आर bombarded in such a way that our choices are
submitted to these advertisements. And this, my friends, is a Western culture. We are neglecting our rich, aesthetic, traditional culture. And the neglect is giving you a bad health, environmental pollution, and the most important thing, मैं जो बोलता हूँ और मैं जो करता हूँ, they do not match. These are the disadvantages of that neglect. And the solution, my friends, is very simple: healthy lifestyle. Let's start. What we are doing, ज्यादातर हम सब जानते हैं. कैसे कर रहे हैं उसमें से कुछ लोग जानते हैं, लेकिन the important and most important question is, हम ये क्यों कर रहे हैं? What is purpose of our life? ये चार हार्मोन्स को हम सब जानते हैं. प्रॉब्लम ये नहीं है ये चारों हार्मोन्स की हमको जरूरत है. प्रॉब्लम ये है कि who is in your driver seat? Is it serotonin which is driving your life, or is it dopamine which is driving your life? यहाँ पर हमारी पूरी डेस्टिनी बदल जाए. डोपामिन, you all know my friends, it is an addictive hormone. अगर से आपकी लाइफ डोपामिन ड्राइवन है, you will never be satisfied in your life. On the other hand, if your life is driven by serotonin, you will get a satisfied and happy, joyful life. So, purpose of life, दो हमारे पास choices है. एक materialistic attitude, जो भी करेंगे पैसे के लिए करें. This will give you a selfish life, a lonely life. You will be in a rat race, surrounded by stress, anxiety, depression, and the only thing you will have is money. On the other hand, if you have a humanitarian purpose, service to humanity, then you will be helpful, respectful. Respect, my friends, is a very powerful emotional demand of our life. लेकिन आज हमने सिर्फ इसको महदूद कर दिया है रोटी, कपड़ा और मकान. रिस्पेक्ट की तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं. इट इज द मोस्ट पावरफुल इमोशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी. देन यू विल गेट सेटिस्फैक्शन, नो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मनी ऑफ कोर्स इट विल फॉल. मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड इज डोपामिन ड्राइवन, एडिक्टिव. इसमें आपको कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा. On the other hand, humanitarian is a serotonin driver. You will be lead a satisfied, happy life. हंसते तो हम रोज ही हैं, हंसते तो हम रोज ही हैं, पर खुश हुए जमाना बीत गया. Understand, my friends, the difference between dopamine and serotonin effect. Financial stability is must. पैसा चाहिए, इसकी कोई दूसरा इसमें कोई वजह नहीं है. लेकिन इसकी कॉस्ट हम क्या दे रहे हैं? एट व्हाट कॉस्ट? इज इट कॉस्टिंग माय लाइफ, माय हेल्थ, मेरे अपने, मेरे नजदीक के सब अगर से इससे प्रभावित हो रहे हैं तो इट इज अ वेरी हाई कॉस्ट. क्या करना चाहिए? फॉलो योर इमोशंस. दैट इज वेरी सिंपल. कैसे करना चाहिए? ट्रूथ, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क. नो शॉर्टकट्स फॉर दैट. दिस इज द बेस्ट चॉइस व्हाट वी कैन हैव. कॉम्पीट विथ योरसेल्फ. लेकिन आज हमने दूसरा चॉइस कर रखा है, कंपटीशन विथ अदर्स. दैट इज क्रिएटिंग होल मेंटल प्रॉब्लम्स विथ अस. साउंड बॉडी इज गुड, वेरी गुड. साउंड माइंड इज बेटर, बट द बेस्ट थिंग इज टू हैव ए साउंड कैरेक्टर. देयर आर टू ब्लेसिंग्स व्हिच मेनी पीपल निग्लेक्ट, हेल्थ एंड फ्री टाइम. अगर से ये दो चीजें हमने अपने जिंदगी में बैलेंस कर ली तो यकीन रखो दोस्तों, हमारे जैसे खुश नसीब कोई नहीं. हेल्थ, एज यू ऑल नो, definition: physical, social and mental well-being, not merely absence of disease. Physical well-being depends on three things: nutrition, exercise, rest. ये सारी चीजें आपको मालूम है, मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ. आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिमाइंडर. अगर से ये मैप्स हम इंडिया के देखेंगे, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एब्डोमिनल ओबेसिटी, हाइपरट्राइग्लिसरीमिया, रेड जोन बता देते हैं कि हम कहाँ खड़े, नंबर्स बता देते हैं कि हम कहाँ खड़े. दिस इज व्हाट वी हैव डन टू ए मॉडर्न मैन. मेटाबॉलिक सिंड्रोम. वी आर treating this, but it has no cure. But definitely and definitely it is preventable as well as reversible.
2 से 3 हफ्ते में आपका ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिवर्स हो जाएगा अगर से आपने अपनी लाइफस्टाइल सही कर टेक माय वर्ड फॉर दैट डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन अ क्वीन एंड अ वर्कर बी इट्स ओनली न्यूट्रिशन माय फ्रेंड्स जेनेटिक्स नहीं बदलती but expression of genetics will change and that is the upcoming new science that is epigenetics very interesting. So good food is medicine, bad food needs medicine, a very important choice. आज न्यूट्रिशन की जब बात करते हैं तो टेस्ट डिक्टेट्स आवर फूड. So we are over nutrited with refined carbohydrates, trans fats, under nutrition with vitamins, minerals and fibers, and white sugar you all know is the poison. हमको चाहिए क्या? हाई प्रोटीन, मॉडरेट कार्ब, नेचुरल फैट डाइट, along with fresh green leafy vegetables and fruits. These contain fibers. Fibers के बारे में एक बात बता दूं दोस्तों. These fibers are food of our gut bacteria, the good bacteria. अगर से हमारे न्यूट्रिशन में फाइबर्स नहीं होंगे तो these bacteria will then eat away our protective mucus layer and we will be susceptible to toxicity. ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लेकिन बहुत निग्लेक्टेड है. कर्ड अ वेरी गुड मीडियम फॉर दिस गट एनवायरनमेंट एंड माइंड इट माय फ्रेंड्स serotonin is secreted in gut but our taste dictates our food. That is a big problem. What and how we should eat: breakfast as a king, lunch as a prince and dinner as a pauper. We have reversed this process creating this metabolic syndrome. 1/3 of stomach, that is the ideal diet we should take. Intermittent fasting, that is the ideal diet plan. But time and ease dictates our food. So that has created many physical problems. Most important is loss of stamina. We think of many things such as nutritional vitamins ki kami hai and so on. But the most important aspect of loss of stamina is your incompetent heart. आज जो सडन डेथ हो रही है एक दिन में नहीं होती दोस्त. ये काफी दिनों से इसका प्रॉब्लम है. दिस हैज बीन निग्लेक्टेड सो दैट हैज क्रिएटेड दिस प्रॉब्लम. सो दिस सेकंड प्रॉब्लम इज पोस्चरल इश्यूज. यंग आज जनरेशन देखेंगे तो ये पोस्चरल प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है. क्यों है? क्योंकि ऑल एक्टिविटीज आर सेडेंटरी and in a flexed position, so the extensor muscles are now going to degenerate causing our back and neck issues. So the solution is quite simple: physical activities. Physical activities से exercise के जैसा नहीं है. It is not equivalent to exercise. रोज के activities, रोज की चीजें हम खुद करें, जैसे कि walking ज्यादा से ज्यादा हो, हमारी lifts का कम से कम इस्तेमाल हो. Kitchen gym was the best exercise, but it is now outdated. एक ब्रेन का कंसेप्ट हम समझ जाए. ब्रेन लव्स इजी टास्क, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Exercise importance, we all know the exercise importance of exercise, but how many of us know the priorities? Cardiac should be our first priority, and the principle for cardiac is high intensity intermittent training. Our heart rate should go 1.5 times the basic heart rate. That is the basic principle of cardiac activities. 2 days a week. Then it is other the core muscles, the abs and the extensor muscles of our body, back muscles, the neck muscles. These are the second priority. You have to keep an upright posture, my friends, and that has to be done with these exercises. That is exercise का जो basic principle है TUT, time under tension. फिर उसके बाद बाकी strengthening exercises ये उसके बाद आती है. और एक ब्रेन का कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ पावर सेविंग मोड. इसको हमेशा याद रखें. जब भी एक्सरसाइज करने में, एक्टिविटी करने में हमको सुस्ती आएगी, प्लीज रिमेंबर दिस कंसेप्ट. जिस चीज की हम इस्तेमाल नहीं करते, जिस चीज को हम इस्तेमाल नहीं करते, ब्रेन उसका न्यूट्रिशन खत्म कर दे. And that thing is to degenerate slowly. That is what is happening with our neck muscles, with our back muscles. These are not being used, so it is being degenerated, causing the neck problems, the back problems. पहले तो हम ये खेला करते थे, आज ये आउटडेट हो चुके हैं. The next concept is sleep.
स्लीप का मकसद क्या है, गोल क्या है? वेक अप फ्रेश विद वैलिडिटी, नो ड्राउजीनेस, नो बॉडी। ये कैसे हो सकता है? दिन में एक्टिविटी, रात में सोना। अ गुड नाइट स्लीप, दैट इज द गोल्डन रूल। एंड दिस इंपॉर्टेंट और एक एस्पेक्ट है कि पावर नैप, दैट इज आफ्टरनून पावर नैप। एक 20 से 30 मिनट हम दोपहर में थोड़ा सा आराम करें। सोने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आराम करें। दैट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग टू कीप यू एक्टिव होल डे लॉन्ग। We all know the importance of sleeps, but what are the conditions that will induce you a good night's sleep? External as well as internal factors. External factors: silence, darkness, quality of air. These are very important. Internal factors: food, physical activity, and forgiveness. Forgiveness, a very important, powerful concept. फॉरगिवनेस से मैं ये चाहता हूं कि किसी को अगर से माफ कर दे तो फिर उसके बारे में डबल सोचने की जरूरत नहीं है। दैट इज फॉरगिवनेस, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेटिस्फाइंग कांसेप्ट। मेंटल वेलबींग, आज थोड़ा इस पर ज्यादा बात करें। We all know nutrition, sleep, these are all required because mental issues has increased tremendously nowadays. Why? This is the modern era issues. Stress management, most important aspect. What is stress? Stress is response of our body to stimulus. This stimulus may be physical, may be virtual, never in our control. But आज हमारी ट्रेजेडी ये है कि हम सब इसी को कंट्रोल करने के पीछे। That is the most important misleading concept. On the other hand, response is governed by our mind, and this, my friends, is under our control. But we are not training our mind to do that. स्ट्रेस का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यस इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय आर, वेयर पी इज प्रेशर. Pressure can be of any amount, no problem with that. If your R is great, R means resilience, the response of your body that is dependent on your mind. So if you train your mind, then that is the most important thing you are doing to yourself. So for that you should know what is mind, what is the purpose of mind, how it works, and then you have to change your mindset. And this concept has been clearly given in our holy scriptures. Bhagavad Gita, Lord Krishna says, your mind is your best friend or your worst enemy. It is how you train. Same is said by Prophet Muhammad, peace be upon him. So mind's primary responsibility, my friends, is survival. इस सर्वाइवल के लिए जो भी चीजें मटेरियलिस्टिक चीजें लगती है, ये इसके पीछे पहले दौड़े। और इसको आज ये बात पता है कि ये चीजें इसको पैसे से मिलती है। सो लव ऑफ मनी इज ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू आवर सर्वाइवल। लेकिन जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू बी कंटेंट, टू बी हैप्पी, यहाँ पर बड़ा पैराडॉक्स है मेरे दोस्त। ये जो भी मटेरियलिस्टिक सर्वाइवल के लिए चीजें हैं, जब इससे ऊपर उठ जाते तब हम कंटेंट होते हैं। ये बात आज हमको समझने की। सो माइंड हाउ इट वर्क्स, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा हमारा माइंड प्रोसेसिंग शुरू कर देगा। ये इसका काम है, बाय डिफॉल्ट इट इज मेड फॉर दैट। ये प्रोसेस जो इंफॉर्मेशन जो हमारे अंदर स्टोर्ड है, वो कौन सी इंफॉर्मेशन है? हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं। दीज आर ऑल द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन स्टोर्ड इन आवर brain from our childhood till now. This is the information that it will process. अगर से ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सॉल्यूशन निकलेगा, अगर से ये नेगेटिव है तो नेगेटिव सॉल्यूशन निकलेगा। इट इज क्वाइट सिंपल। तो ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप to train your mind is being mindful, and this is the classical example of being mindful. And the process by which you can make your mind mindful is meditation. मेडिटेशन के बारे में भी हमारी गलत फहमी है कि हम मेडिटेशन करेंगे तो हमको पीस मिलेगा। इट इज जस्ट अ प्रोसीजर, इट इज जस्ट अ प्रोसीजर टू ट्रेन अवर माइंड टू फोकस ऑन वन पर्टिकुलर थिंग। मल्टीटास्किंग के लिए हम बनाए गए नहीं है। आज हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम मल्टीटास्किंग। जब हम सिंगल टास्किंग हो जाते हैं, दैट इज माइंडफुलनेस, एंड द बेस्ट ट्रेनिंग इज मेडिटेशन। रोज हम 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करें, दैट विल ट्रेन योर माइंड टू बी माइंडफुल।
The next step is avoid negativity, most important concept, क्योंकि जब भी नेगेटिव कोई चीज आती है हमारा माइंड स्टिमुलेट होता है, पॉजिटिव चीज में हमारा माइंड स्टिमुलेट नहीं होता. इट इज बाय डिफॉल्ट अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. जब भी कोई नेगेटिव चीज सुनेंगे, जब भी कोई नेगेटिव चीज होगी, जब भी प्रॉब्लम आएगा, हमारा माइंड स्टिमुलेट हो जाएगा. सो ऑलवेज बी वेरी केयरफुल विथ योर इमोशनल न्यूट्रिशन. क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या कहते हो, क्या करते हो, these are very important. Always be very cautious about news, social media, gossip, bad bits. अगली स्टेप है be in a good company because you are the company you keep. Stay away from addictions because you all know these are dopamine drivers. The worst addiction of modern era, that is this social media. Always be very careful about this. इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो ईज है उसको हम हटा दें. जितने भी एप्स हम फर्स्ट पेज पे रखेंगे उसको लास्ट पेज पर लगा दें, क्योंकि जितना ईज होगा वी विल बी एडिक्टेड. जितना ईज हम कम करेंगे वी विल बी डी एडिक्टेड. दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल. देन यू विल हैव टू हैव ए गुड रोल मॉडल. इस पर भी हमारा कोई तवज्जो नहीं है, इस पर भी हमारा कोई ध्यान नहीं है. ऑलवेज रीड होली स्क्रिप्चर्स, always read good literature, always have autobiographies, read autobiographies of great people. This is a rich source of serotonin. आज हम पढ़ते बहुत कम है, देखते ज्यादा है, और देखते भी क्या है, सिर्फ एंटरटेनमेंट. तो जो भी सोशल हम इंटरनेट का जो हम यूज करते हैं, दिस शुड बी फॉर दिस गुड लिटरेचर, ऑटोबायोग्राफीज, नॉट फॉर एंटरटेनमेंट. हाँ, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट चलेगा, लेकिन कंटिन्यूअस एंटरटेनमेंट नो माय फ्रेंड्स. प्लीज, this is addiction. Socially we should be beneficial to the society. That is as simple as that. बेसिक हमारा लाइफ की फिलॉसफी ये होना चाहिए कि इस दुनिया में आया हूं तो लोगों की मदद करो. किस तरह से करना है ये हमारा फोकस होना चाहिए. और जाते वक्त मेरी अपने जैसी कॉपीज छोड़ जाओ. दैट शुड बी आवर बेसिक प्रिंसिपल, लाइफ फिलॉसफी. दिस इज a rich source of serotonin. It will give you a satisfactory life. And for all this you will require time management. ये सारी चीजों को जब हमको बैलेंस करना है तो टाइम मैनेजमेंट इज अ मस्ट. सो नाउ व्हाट इज द गोल ऑफ टाइम मैनेजमेंट? बहुत बेसिक सवाल है, इसका आंसर भी उतना ही बेसिक है. यू हैव फ्री टाइम. फ्री टाइम से मतलब क्या है? सो दैट यू एंजॉय क्वालिटी ऑफ लाइफ. नाउ व्हाट डज क्वालिटी ऑफ लाइफ मीन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Create great relationships. Yes, my friends. Quality of life means to create great relationship. किनके साथ? 5 चीजों के साथ. सबसे पहले अपने गॉड के साथ, अपने ईश्वर के साथ. To have a relationship with our God first and foremost. Second is God का best creation, हम खुद. सेल्फ के साथ, आज अपने लिए हमारे पास वक्त नहीं. A very bad concept. अपनों के साथ, अपनों के साथ हमारा रिश्ता सही हो जाए, औरों के साथ हमारा रिश्ता सही हो जाए, और नेचर के साथ हमारा रिश्ता सही हो जाए. So when we develop these 5 great relationships, you will have a satisfactory, happy life. That will create a great character in you. Now again the question is, what is character? Always assess yourself in these 3 criteria. फर्स्ट इज, तुम अकेले में जो हो वो तुम्हारा किरदार है. तुम सबके साथ हो वो तो तुम्हारी पर्सनैलिटी है. पर्सोना मींस फेस मास्क, लेकिन किरदार अंदर की चीज है. तो अकेले में तुम जो हो वो तुम्हारा कैरेक्टर है. व्हेन गिवन ऑप्शन, व्हाट यू चूज, दैट इज योर ओरिजिनल कैरेक्टर. सो ऑलवेज बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ व्हाट यू चूज, व्हिच ऑप्शन यू टेक. And third is what you do for the one who cannot do anything for you. That is your original character. So now healthy lifestyle. Now I will summarize it into just 4 things. Your choices in just 4 things. First is nutrition. Always requirement should be your choice. Sleep. Always good night sleep with an afternoon nap. Physical activities. अपने काम खुद करना सीखे. ज्यादा से ज्यादा हम जो सुस्ती करते हैं उसको छोड़ें, because you have been made for physical activities. Stress management, very important, and practical plan for that.
6 things you must do. To start with, 6 things you must do in a day. No, you might be busy in anything, you might be busy like anything. I know we are all very busy, लेकिन ये 6 चीजें हमने हर रोज करना ही करना है. That should be the start of our day. तो हमारा दिन स्टार्ट होना चाहिए sun rays entering your eyes. Most important. That will set your body in a default mode. For that, you should have a good night sleep, balanced, nutritious diet, social connections, active physical life, and helping attitude. So these are the 6 things, no compromise in all these things. You should have all these 6 concepts in your everyday life. Now I will summarize all my talk. Change your mindset, my friends. Come to the healthy lifestyle mindset. Your choices decide your destiny. Change your day and be consistent. That is how you can change yourself. Start from the purpose. Why you are doing this? Is it humanity or only materialistic attitude? Career. How? We should be self-competition should be your choice. What? Be expert in your passion. Be healthy physically, socially, mentally. Have a balanced, nutritious diet. Active physical life, exercise, cardio, strengthening, and stretching. 5 days a week you should have exercise. Rest for 7 hours, that should be a good night sleep with an afternoon nap. Mental health, avoid negatives, avoid addictions, choose your right role model, and be in a good company. So take home message, my friends. नजरिया बदलो, नजारे अपने आप बदल जाएंगे. उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया, उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया, तो वो दौड़ते गए. हमें सुकून में कामयाबी दिखी, तो हम ठहर गए. थैंक यू वेरी मच.